अस्सलाम वालेकुम। अच्छा इस टाइम एक्सपो में सेकंड डे है और जिस तरह मेरे बैक साइड पे देख रहे हैं कुका केबल वाले हैं तो मैं डायरेक्टली चैनल के पास ही आ रहा हूँ जो कुका केबल मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, क्योंकि बाकी और भी ब्रांड्स हैं जो से इसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, लेकिन मैं डायरेक्टली जो सिस्टम डिस्कस करने वाला हूँ वो कुका केबल वालों के साथ जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। अभी हम चलते हैं कुका केबल वाले के पास। Hi Alec, how are you? Hello. This is the main. Nice to meet you. Yeah. Details जो Alec है ये मेन जो सिस्टम लीड कर रहे हैं और इसी से रिलेटेड जो सी डिटेल्स हैं वो Alec देंगे और जो फर्दर हम डिटेल उनसे लेते हैं। Hi Alec, kindly introduce your equipments and wires which you have. Yeah. Kuka cable was established in 2012 and we are focused on the solar DC cable, DC solar cable. Yeah, this one. Yeah, it is a double layers with the thinner copper. And in the last year, Kuka was exported more than 10,000 kilometers to Pakistan markets. And Kuka is the #1 overseas brand of a DC solar cable in Pakistan at the moment. Yeah. That's great achievement. Thank you. So tell me more about your products, which wire you have and how much. Yeah. And the most of the popular size are the 4mm and the 6mm. Okay. Black and white. Yeah. Right. So it is a very simple, not a conflict cables and the business. Yeah. Right one. That one is 4mm and in Pakistan you have 4mm and 6mm. Exactly. Yes. This is fireproof. Fireproof. Yeah, very extreme high fireproof and double axial PU layers with thinner copper. It's low smoke and halogen free. Low smoke, halogen free, UV resistance, and a low temperature and a waterproof, everything. Oh, that's a great everything. So I can see that. What's that about? Yeah. That's one. How is this is? And this is AC aluminum power cable. Yeah, aluminum conductor, XLPE insulation, and outer shell is PVC. This is for power cable. This is AC side. AC side. Yeah. Okay. But rarely we exported this power cable to Pakistan because due to the local manufacturer, they are strong in the AC side. Okay. Yeah. But in Pakistan, you're mostly sending DC cables. Yeah. Mostly DC. Okay. Right one. I can see this is you have MC4 also. Yeah. This is our main point is MC4. Yeah, MC4 connector. This is 1000 voltage or 1500 voltage? Yeah, 1050. 1000 voltage. 1050, 500. Okay. Yeah, with the TÜV certificate under the Kuka brand MC4, and this is copper tinned as well. Yeah, great. 99 purity. Yeah. The waterproof level is IP68. Yeah, this one is IP67 or 68? 68. 68. Oh, 68. Great. Yeah. This one is tin copper. Tin copper. Yeah. That one is tin copper. Yeah. Not only copper. Tin and the coated is tin copper. Okay. Yeah. This is pure copper. Pure copper. Not mixing. Pure copper. Okay. 90%. Yeah. That's one. You can check it. Here is the brand name is also Kuka cable. The brand name is, and that one is I think. Where's the mark is 1500 voltage? No. The voltage is not marking on it. Yeah. So how can identify this is 1000 or 1500? That's the main point. Any other thing you have? I think that's all. The mainly we do is the solar DC cable, and sometimes if client they need some accessories like MC4 connector, no problem. Yeah, that's the point. On demand you sending MC4 in Pakistan. Yeah. Otherwise you have mostly high item. Yeah. Hot item is DC cable for Yeah. Exactly. I also use it for Kuka cable in my sites. Yeah. The result is awesome. Yeah. That's why I have video. Thank you. So भाईजान ये है एलेक, जिसे कहना मैं अभी आपसे इंट्रोड्यूस करवा रहा था और मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। उर्दू में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझना ईजी हो। ये MC4 वगैरह जो से हैं 15 वो भी करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान में सिर्फ ऑन डिमांड भेजेंगे। जो कुका केबल है वो ऑलरेडी है पाकिस्तान में 3-4 डिस्ट्रीब्यूटर इनके जो से लेके आ रहे हैं। मैं चलिए डायरेक्ट कंपनी से आपसे मिलवाया। बैक साइड के ऊपर देख सकते हैं कुका केबल भी लिखा हुआ, ठीक है। और यकीन माने आउट क्लास रिजल्ट है, हैलोजन फ्री है, इसको आग नहीं लगती, फ्री है, ठीक है। इसको मैंने टेस्टिंग की, मैं वीडियो में नेक्स्ट दिखाऊंगा, आग लगा के दिखाऊंगा, आग नहीं लगेगी, फायर प्रूफ है, उसमें इशू कोई नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर नेक्स्ट टाइम वी कैन मिस। Thank you.